परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हम आपको दिखा रहे हैं परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की केरल यात्रा। दक्षिणी भारत के इस केरल राज्य में बौद्ध अनुयायियों को अरसे से इंतजार था परम पावन के दर्शन पाने का। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से 5 दिन का समय निकालकर आखिरकार परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने बौद्ध अनुयायियों को कृतार्थ किया। केरल में परम पावन गेलवांग करमापा ने जिधर का रुख किया उसी ओर हजारों की तादाद में उनके अनुयायी सड़कों पर उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। केरल के इस इलाके में लोग बारिश न होने से बेहाल हैं। अरसे से लोग बारिश की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। इस पूजा का आयोजन भी बारिश के लिए किया गया है। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा भी पूजा में शामिल होते हैं। इसे आप चमत्कार मानिए या फिर परम पावन की शख्सियत कि इंद्र देवता मेहरबान होते हैं और बारिश हो जाती है। परम पावन का अब ये अगला पड़ाव है जी फुक मोनेस्ट्री। परम पावन मोनेस्ट्री का उद्घाटन करते हैं। भारी तादाद में मौजूदा लोग परम पावन के आशीर्वाद के लिए आस लगाए खड़े हैं। परम पावन भी किसी को निराश नहीं करते और सभी को आशीर्वाद देते हैं। परम पावन मोनेस्ट्री में आयोजित पूजा में भी शामिल होते हैं। परम पावन करमापा का बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। परम पावन बाहर आकर बड़े प्यार से सभी से मिलते हैं। परम पावन का अब अगला पड़ाव था थोचिन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री की ओर से परम पावन का पारंपरिक तिब्बतियन तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है। थोचिन मोनेस्ट्री के परम पूजनीय रिम्पोचे परम पावन को उपहार स्वरूप भगवान बुद्ध और गुरु पद्म संभव की मूर्ति देते हैं। यहाँ मंडाला भी ऑफर किया जाता है। परम पावन यहाँ पर आयोजित पूजा में भी शिरकत करते हैं। ये केरल का वो बौद्ध इलाका है जिसकी सालों पुरानी तमन्ना थी कि कभी परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के साक्षात दर्शन हो, और इसीलिए जब परम पावन उनके बीच पधारे तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी खुशी का अंदाजा इनकी मौजूदा तादाद को ही देखकर लगाया जा सकता है। यहीं परम पावन के सम्मान में कुछ इस तरह कहा जाता है। यहाँ से निकलकर परम पावन का अगला ठिकाना कौन सा था, वो कहाँ गए और कहाँ रुके अपनी इस केरल यात्रा के दौरान, ये अब हम आपको दिखाएंगे अपने कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें,
कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Tile. My name is Kunka. I'm an astrologer from Tibet Medical and Astro Institute. The following are daily predictions for the month of September. 8 September 2010, Wednesday, 30th lunar day and 7th lunar month. Elemental combination is fire, water. That combination, but negative activities such as taking lives of others and making curses will be effective. In addition, this day is Shangin or bad day, which is also unfavorable. This day is also unfavorable for almost all kinds of activities, especially for the people who belongs to horse and snake years. Pumdong is at each direction, so important activities should not be done while facing each direction. Thanks for watching. See you tomorrow at same time in same channel. Buddham Saranam Gacchami. क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। The consciousness, the level of consciousness, three categories. One, basis. One, not tackling that mind. Another level. The third level, out of dealing with the mind, finally can be completely purified mind. So this also can say the first reality, present reality, and explanation about that I consider science. And then second, the tackling. Application. Application. That's method. That's philosophy or concept. Then third, as a result. Like Four Noble Truths. When Buddha first stayed, first because the wheel of Dharma, which is start, the Denshing all of them a child, the child, the Buddha Devas, and Deva Sum Sadigi, she nature. She did it be in some any Langdon Judoki, child Deva. Langdon Judo, Tedachavina, Devu, any Sabashi, but Midio Shiva, young to Sundo. So this is comparable to understanding the Buddha's first public sermon on the Four Noble Truths. If you look at the Buddha's actual sermon, he presents his teachings on the Four Noble Truths by way of 3 repetitions. In the first stage, he identifies the specific nature of the truths, the truth of suffering, its origin, cessation, and the path that leads to the cessation. And then in the second round of explanation of the Four Noble Truths, then he talks about the functions of each of these, knowledge of each of these truths. So the fact that suffering must be recognized, the origin of suffering must be removed, cessation of the suffering must be actualized, and the path must be cultivated. So this is second round. He explains what needs to be done
with that understanding. And then in the third round of repetition, he explains what are the results that one may attain as a result of application of that knowledge. So here we can see that even in the first public sermon, Buddha's teaching on the Four Noble Truths, he presents the teachings in the context of understanding the nature of reality, the first stage. Second is the application of that knowledge in one's daily life and practice. And then the third is the result one will achieve from that path and application. So usually I make sort of three sort of categories. Distinction of Buddhism. Buddhist science, the first part I consider as Buddhist science. Second, Buddhist concept or Buddhist philosophy. Buddhist concept or philosophy come on the basis of today's reality. So that's Buddhist science. Then Buddhist concept or philosophy. Then Buddhist religion. Because of that, because of possibility to elimination of all negative emotion, then worthwhile start some practice. So here in this text also, the surely, 다들 정신 디셔야 돼. 되네 니버디 된지 집에 있는 자네 랑도 죽도 셔야 돼. 될 때네 애는 레뷰냐 그게. So in the text that was originally planned to be commented upon, in fact, we read a similar presentation here. So it says that the actual explanation has three sections. The first is how to analyze the fundamental ground of the mind and how to identify the innate primordial state. So that corresponds to understanding the nature of reality. And then searching for the hidden dimension of reality by analyzing how the mind arises, abides, and moves on. Correct. So and then so the second one says, having effected the introduction, how to implement that into practice. And then the third one says how the levels of realization and experiences arises on the basis of that practice. 아니 슈드 question 이래. 두. question 이봐. 다다리. Now, in the past, I think more than 20 years, we had some sort of serious discussion or seminar with scientists. There is some sort of dialogue or discussion, or actually mutual learning. Of course, basically it's four fields: cosmology, neurobiology, and subatomic physics, such as quantum physics, then psychology. So, and quantum physics also is in some
similar view. A cosmology, basically same, but then some particular sort of description about the world, flat, and in the center, Mount Meru. These are up-to-dated. Of course, the Buddhist text, the different description about cosmology. So therefore, so in a sense, the Buddhists have a liberty to choose which one they want to take. Then some of the such as quantum physics. Oh, really, great interest over 2,000 years. Sort of what's the Buddhist concept and modern latest sort of findings, scientific sort of findings, physicist sort of finding. There are many similarities. Then, in any way, about the physical part, there are many things to learn from modern science to Buddhist. So really worthwhile, listen or study from them. Then the neurobiology, although the Buddhists, particularly in Tantrayana, say mind and energy. So quite interesting, you see, to investigate the relation between emotions and the neurons and these things. But as far as the physical side, the modern science much more advanced. So very useful to learn from them. But the connection between neurons and the consciousness, mind, still is not very clear. The modern science or psychology, usually they call soft science. Soft science. I think very young, very, very young, something like kindergarten. The ancient Indian sort of science of mind seems much advanced. So a lot of information, something useful to modern scientists.